अजीज दोस्तों नमस्कार। अजीज दोस्तों, अमेरिका के हवाले से मैं कुछ चीज़ें लाने से पहले एक बहुत ही अजीब सी चीज़ आई है सामने। वो ये है कि एक साहब हैं, उन्होंने पोस्ट किया है कि मैंने फैसला किया है कि मैं एमपी बनूंगा, ब्रिटिश एमपी, पार्लियामेंट का मेंबर। ब्रिटेन की बेस्ट जॉब है, क्योंकि आपको कोई टैलेंट की ज़रूरत नहीं, कोई मॉरलिटीज़ की ज़रूरत नहीं। एक अच्छा सूट पहन के आपको जितना झूठ बोल सकते हो बोलना है। इसके लिए आपको पर ईयर 90,000 पाउंड सैलरी मिलेगी। लंदन में एक फ्री घर मिलेगा, हर एमपी को लंदन में एक घर मिलता है। और अगर आप ऑलरेडी लंदन में एक घर के मालिक हैं तो आप अपना मालिक जिस घर के हैं उसको किराए पे चढ़ा दें, आपको घर सरकार देगी, बेहतरीन घर देगी। जितना ट्रैवल करना है यूके के अंदर फ्री। ऑफिस, प्राइवेट ऑफिस, यानी आपका एक तो पार्लियामेंट में ऑफिस है एक अलग, वो भी सरकार भरेगी। इलेक्ट्रिसिटी गैस सरकार भरेगी, वाईफाई सरकार भरेगी। इसके अलावा आपको मुख्तलिफ प्रोग्राम जो कंसर्ट वगैरह होते हैं उसकी कंसेशन पे टिकट्स मिलेंगे, कई फ्री में मिल जाती हैं। 24 घंटे आपको सस्ता खाना अवेलेबल है। 3.5 पाउंड का स्टेक 12 पाउंड का मिलता है आम रेस्टोरेंट में, हाई क्वालिटी का। 1 पाउंड 20 पेंस की बियर। तो ये वाकई हकीकत है। ये सबसे अच्छी जॉब खाली इंग्लैंड में नहीं, दुनिया में हर जगह होती है। अजीज दोस्तों, अमेरिका के वाइस प्रेसिडेंट जेडी वांस वैसे तो एक अच्छे आदमी नजर आते थे, इलेक्शन से पहले बिल्ली थैले से बाहर आ गई। मसला यह है कि जितने अब्राहमिक रिलीजन के लोग होते हैं ना, इनकी लाइफ का मकसद ही ये होता है कि ये अपने इर्द गिर्द चारों तरफ सबको अपना मज़हब का बनाना चाहते हैं। इनकी वाइफ हिंदू हैं, 2 बच्चे हैं, और हमेशा इलेक्शन के दौरान इन्होंने कहा था कि मेरी स्ट्रेंथ मेरी वाइफ है, और वाकई इनकी वाइफ ने इनकी लाइफ में बहुत साथ दिया। अभी एक जगह स्पीच करते हुए ये कह रहे थे कि मैं मज़हब से दूर था, क्रिश्चियनिटी से दूर था। पैदा मैं क्रिश्चियन फैमिली में हुआ, लेकिन मैं मानता नहीं था किसी मज़हब को। मेरी बीवी ने मुझे ज़बरदस्ती फोर्स किया, एक तरह से फोर्स से मतलब को गन पॉइंट पे नहीं, लेकिन मुझे समझा समझा के कहा कि तुम वापस अपने मज़हब से जुड़ो। और मैं सिर्फ अपनी बीवी के समझाने पे, उसके मुझे इनकरेज करने पे मैं वापस क्रिश्चियनिटी की तरफ आया हूँ। और अब मैं चाहता हूँ, मैं इंतज़ार कर रहा हूँ कि कब मेरी बीवी क्रिश्चियनिटी की तरफ आए। देखें, एक हिंदू बीवी ने ये कोशिश नहीं की कि उसको हिंदू बना दे, ये कोशिश की कि उसको उसके मज़हब की तरफ। ये बड़ी खूबी है सनातन में। आपको कभी कोई सनातनी तबलीग करता हुआ नहीं मिलेगा। कोई एक आदमी नहीं कहेगा कि भाई साहब तुम हिंदू हो जाओ। वो उसको उसके क्रिश्चियनिटी की तरफ भेज रही थी, और ये भाई साहब कह रहा है कि मैं वेट कर रहा हूं कि कब वो क्रिश्चियन बन जाए। एक हद होती है कि नहीं? वो भी वाइस प्रेसिडेंट के ओहदे वाला। आप सोचें, पब्लिक में ये कह रहा है तो ये बीवी पे कितना प्रेशर डालता होगा। ये ट्रंप और इसकी पूरी टीम ही कोई खबीस किस्म के लोग हैं। और फिर जब बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पर हंगामा मचा तो कह रहा है कि नहीं नहीं नहीं, मैंने कोई ऐसे ही कह दिया था, मैं उसके ऊपर कोई फोर्स थोड़ी कर रहा हूँ। और मैं क्रिश्चियन हूँ तो जाहिर है मैं गॉड के करीब हूँ, तो मेरी ख्वाहिश होती है कि मेरी बीवी भी वो हो जाए क्रिश्चियन, लेकिन मैं उस पर कोई प्रेशर थोड़ी डाल रहा हूँ, वगैरह वगैरह। डैम फुल। अजीज दोस्तों, न्यूयॉर्क के मेयर के इलेक्शन हो रहे हैं, और ममदानी पूरे ज़ोर शोर से जीत का पूरा चांस है इसका। बर्नी सैंडर्स एक बिलियनर है और अमीर तरीन आदमियों में से एक है। वो उसकी कैंपेनिंग खुल के कर रहा है, और लोगों को ऐसे ऐसे वो कर रहा है। उसमें देखें, ममदानी जब मेयर के इलेक्शन के लिए इसने अपने आप को नॉमिनेट किया ना, इससे पहले वो कभी भी
डिप्लोमेसी से काम नहीं लेता था। वो हिंदुओं के खिलाफ भी बोलता था, वो यहूदियों के खिलाफ भी बोलता था, वो इस्लामिस्ट था। लेकिन नॉमिनेट होने के बाद इंसान का बच्चा बन गया, मंदिरों के भी दौरे करने लगा और ये सब चीज़ें। तो पता नहीं हमारे हिंदू इतने नाइफ क्यों हैं, सब नहीं लेकिन काफ़ी इसकी सपोर्ट में खड़े हो गए हैं। तो भूलना नहीं चाहिए, ममदानी का बाप है ना, महमूद ममदानी, वो उसने किताब लिखी थी। उसमें इसने लिखा था कि सुसाइड बॉम्बर है ना, उसको हमें एक सोल्जर की कैटेगरी में, यानी सुसाइड बॉम्बर कौन होता है आपको पता है, ये जो अपने सीने पे बम बांध के किसके खिलाफ लड़ता है, स्टेट के खिलाफ। जैसे 9/11 पे जो सुसाइड बॉम्बर ही गए थे ना, ये कह रहा है उनको सोल्जर कहो, टेररिस्ट ना कहो। और सुसाइड बॉम्बर भी अपनी जॉब कर रहा है। और हमें समझना चाहिए कि ये मॉडर्न पॉलिटिकल वायोलेंस का हिस्सा है। बड़ी लंबी चौड़ी इसकी किताब पढ़े आदमी की मथा घूम जाए। ये मेयर बनने जा रहा है न्यूयॉर्क का, इसका पूरा चांस हो गया है मेयर का। अगर डोनाल्ड ट्रंप कोई तरीके से कोई पावर यूज़ करके इसको रोक सके तो रोके, वरना कोई रोक नहीं सकता, मैं आपको बता दूं। और सादिक खान ने लंदन का बेड़ा गर्क कर दिया। मैं जब 2012 में लंदन मूव हुआ था तो बोरिस जॉनसन मेयर था यहाँ का, वेट 3rd क्लास प्राइम मिनिस्टर बोरिस जॉनसन, लेकिन एक्सेलेंट मेयर था वो। लंदन वॉज ज़बरदस्त। सादिक खान ने बेड़ा गर्क कर दिया। मैं आपको बता दूं, ममदानी सादिक खान से 10 गुना ज़्यादा ख़राब है। उसने जो न्यूयॉर्क का हाल करना है ना, वो आप देखिएगा। अजीज दोस्तों, अमेरिका में अमेरिकन्स और डोनाल्ड ट्रंप की जंग चल रही है। अमेरिका को उसने तकरीबन सिविल वॉर पे धकेल दिया है। इसने अभी रिक्वेस्ट की है कि ये जो गवर्नमेंट आप शट डाउन करके बैठे हो, ये रिकॉर्ड पीरियड है अमेरिका के हिस्ट्री में, इतने दिन तक गवर्नमेंट बंद नहीं रही। तो ये कह रहा है कि मैं नहीं चाह रहा कि अमेरिकन भूखे मर जाएं, क्योंकि रेडिकल डेमोक्रेट्स हैं ना, वो गवर्नमेंट खोलने को तैयार नहीं है। तो पब्लिक सड़कों पे आ चुकी है। मिलियंस ऑफ लोगों ने मार्च करके इसको इसको वार्न किया है कि हम तुम्हारी पॉलिसीज़ के खिलाफ हैं। यूएसए की सेनेट ने रेजोल्यूशन पास किया है कि कनाडा के ऊपर तारीफ जो लगाए हैं, आपने जो टैरिफ लगाए हैं, वो एक्सेप्टेबल नहीं है। गवर्नर कैथी होचुल ने कहा है कि न्यूयॉर्क सिटी अंडर अटैक है। हमारी स्टेट न्यूयॉर्क और हमारा सिटी न्यूयॉर्क अंडर अटैक है डोनाल्ड ट्रंप और रिपब्लिकन्स के ज़रिए। इसने सारा काम बंद करवा दिया है। अजीज़ दोस्तों, अमेरिका इस वक्त बहुत ही ख़तरनाक फेज से गुज़र रहा है। एक झूठा आदमी जिसने अभी जापान के ट्रिप के बाद आके कहता है कि टोयोटा ने ऐलान किया है कि $10 बिलियन हम अमेरिका में इन्वेस्ट करेंगे। टोयोटा ने जवाब दिया कि सॉरी, ऐसा हमने कोई वादा नहीं किया। ये डोनाल्ड ट्रंप जो कह रहा है, दैट इज़ ब्लेटेंट लाई। हमने कोई इन्वेस्टमेंट की बात ही नहीं की। इस तरह के झूठ, इंडिया पाकिस्तान की जंग मैंने रुकवाई और ये, और मोदी कह रहा है मैं पेट्रोल नहीं खरीदूंगा रशिया से, और झूठ पे झूठ बोल रहा है ये आदमी। और अब इसने जो नया ऐलान किया है वो ये है कि अमेरिका के पास दुनिया में सबसे ज़्यादा न्यूक्लियर वेपन्स हैं। हालांकि नहीं है, सबसे ज़्यादा रशिया के पास हैं। और 30 साल से अमेरिका ने न्यूक्लियर टेस्ट के ऊपर पाबंदी रखी थी, लेकिन मैंने अब ऑर्डर कर दिया है कि नए न्यूक्लियर वेपन्स टेस्ट किए जाएं। ये नोबेल पीस प्राइज़ कह रहा है मैं जंगें रुकवा रहा हूँ, तो न्यूक्लियर बॉम्ब कहाँ अपने अंदर लेने के लिए बना रहे हो। तो अजीज़ दोस्तों, यहाँ मैं आपके सामने, मेरे पास और ख़बरें हैं, लेकिन मैं एक खूबसूरत स्पीच आई है मेरे सामने, 14 मिनट की है। ये आपके सामने मैं रखना चाहूँगा, जिसमें ये बता रहे हैं कि इस्लामिस्ट अमेरिका की मौत चाहते हैं, हर क्रिश्चियन ज्यूस को मारना चाहते हैं अमेरिका में। ये एक वायलेंट कल्ट है और हमारे मुल्क में इसकी जगह नहीं होनी चाहिए।
शरिया लॉ को दफन कर देना चाहिए। स्पीच ज़रूर सुनिएगा, आपको पसंद आएगी। अजीज दोस्तों, थैंक यू वेरी मच फॉर ऑल योर सपोर्ट। काइंडली कीप सपोर्ट। I come to the floor today to talk about two bills I recently introduced to shut down Sharia law in this country. I ruffled some feathers a few weeks ago when I came to the Senate floor to talk about what I believe is the greatest national security threat facing the United States of America: radical Islam and Sharia law. The Democrats and the mainstream media, they've been coming after me ever since I started talking about this subject. But after spending 40 years coaching, I don't really care what people think about me. I love this country, and I want to save this country for our kids and our grandkids. You know, I was back in Alabama this weekend, and I heard from countless Alabamans who told me they are 100% behind what I'm talking about. At the end of the day, I work for the great people of Alabama and the great people of this country, not the pearl-clutching media that is out there hammering me every day. Speaking of Alabama, I'm proud that the Yellowhammer State banned Sharia law a long time ago. For too long, people have been afraid to call out radical Islam for what it is. Because if you dare to speak out, the left will come after you, your family, your reputation, and your job. They'll try to ruin your life just because they disagree with you. That's how they play the game. One of the radical left's go-to tactics is to accuse anyone who disagrees with them as being a racist, a bigot, or intolerant. They've tried that with me, calling me an Islamophobe for calling out the evils of Islam. But there's only one problem with that strategy. One, radical Islam isn't a race, it's an ideology. It's a choice. And I would argue it is a cult. So no, I'm not an Islamophobe. If you want to peacefully practice your religion, that's fine with me. That's what our Constitution gives you the right to do. Our Constitution gives you that right, and that's why we have millions of Christians, Jews, Mormons, Hindus, Buddhists, and peaceful Muslims who worship freely in this great country of ours called the United States of America. But if you come here, you are expected to assimilate to our country and our values. I recently saw a stat that absolutely shocked me. We have 42 million people in this country that are on food stamps. 42 million. You would think these people are just Americans who have fallen on hard times, which is who the program is for. But a disproportionate amount of these 42 million people are immigrants. 45% of Afghanistani immigrants are on food stamps. 42 of the Somalian immigrants are on food stamps. And 59% of all illegal aliens are collecting food stamps. 59%. So clearly, these people are not coming here and assimilating in our America way of life by working hard and taking care of your family. What an idea. They are coming here to mooch off the American taxpayer. It's wrong, and we need to call it out. But beyond the taxpayer concerns, this religion is also fundamentally incompatible with our Western values, so wake up, America. The Quran instructs Islamists to fight Jews and Christians, along with anyone else who doesn't believe in Allah. Simply put, radical Islam teaches that it is righteous to kill Christians. It's righteous. There's no peaceful coexistence with this type of people. None. Just look at the Middle East and North Africa, where Christians and Jews are being slaughtered by the thousand. Where's our media? Where are they at? More than 7,000 Christians have been slaughtered by radical Muslims in Nigeria so far this year. 7,000. That's 35 people that have been killed every day this year.
Where's the mainstream media? How come they're not talking about that? Radical Islam demands complete obedience, complete, 100%, and will kill you if you dare to speak out against their beliefs and ideologies. This isn't anything new. Muslims have been fighting to wipe out Christians and Jews for centuries. But now the problem isn't just confined to faraway Middle East. It's happening right here in our backyard in 50 states. We're already seeing cities in Michigan, Minnesota being taken over by Sharia law. In Dearborn, Michigan, a Christian pastor recently protested a street was named after a radical Islamist terrorist. Pastor just complained about it. In response, the Muslim mayor of Dearborn told the pastor that he is no longer welcome in the town and will celebrate the day that he leaves. Think about that. A Christian pastor is being silenced here in America for objecting to a taxpayer-funded road being named after a terrorist. We're losing it. Or take what has been happening in Minneapolis, Minnesota, which has been and seen a massive influx of Somalians moving into their neighborhood. I recently saw a story that absolutely shocked me. More than 75 Somalians have been arrested in a massive scheme where they stole $300 million from a American taxpayer-funded child nutrition program. $300 million. So these Somalian criminals came to Minneapolis. They took advantage of our free schools and our free health care, and then they stole $300 million from American taxpayers right under our noses. Where is the media? Where's the outrage? And where did this money go? Where do you think it went? You guessed it. It went back to Somalia. It's disgusting, and these people should be deported, if not in jail for life. In case you're still unclear about the dangers we're facing, here are a few reasons why Sharia law does not work in a Western society like the United States. In America, we value free speech. The U.S. Constitution gives us that right. The First Amendment is what makes this country, America, great. You're allowed to express your opinions publicly without fear of the government arresting you or killing you. But under Sharia law, any criticism that goes against what Muhammad or the Quran says can be punishable by death. Further, under the U.S. Constitution and the First Amendment, equal rights for people of all faiths are protected. Western culture treats everyone equal, regardless of their religious beliefs. Under Sharia law, if you are not a Muslim, you are treated as the enemy. Radical Islam says you can discriminate against and even be violent towards non-Muslims. We see that happening now in Europe, where non-Muslims are being violently attacked every day, all over Europe. It's because Sharia law not only accepts but encourages this type of disgusting behavior. Another major difference between Islam and our Western culture is the way we treat women. In the U.S., marriage happens when a man and woman mutually decide that they want to get married and be with each other. But under Sharia law, older men are allowed to marry 6-year-old girls, which is unbelievable. 6 years old. That's not marriage. In America, we call that pedophilia. But that's just scraping the surface. In Sharia law, women are sold, raped, trafficked, no problem to them. That's their way of life. Women are not allowed to get an education or have a job. They aren't even allowed to leave home without a man escorting them. And women are forced to wear burqas
which cover basically everything but their eyes. Meanwhile, men are allowed to have multiple wives, marry children, and do not have to cover their heads. It makes your blood boil. Not to mention the horrible way that minorities are treated in countries that follow Sharia law. There's no tolerance in these countries. If you live in a country that practices Sharia law and are not Muslim, you're lucky if you aren't thrown in jail or killed. That's because Islam and Sharia law teach that you must hate non-Muslims and should wage jihad, which literally means holy war against people who do not believe. One thing I find particularly ironic is how the left turns a blind eye to the horrible ways LGBT people are treated in countries that follow Sharia law. In countries like Iran, Saudi Arabia, and Yemen, gay people are often given the death penalty. Does that sound like a peaceful, tolerant religion to you? Not me. Unfortunately, this poisonous religion, which I think is closer to a cult, is rapidly growing in this country. Wake up, America. Look no farther than New York, where a radical Islamist, Zohan Mandami, is the front runner to become the next mayor. Mandami has tried everything he can do to hide his radical Islamic beliefs ever since he started campaigning. But he was recently seen in a photo with the co-conspirator of the 1993 World Trade Center bombing. Think about that. And they're getting ready to elect him mayor. The leading candidate for mayor of New York City is cozying up with an openly jihadist terrorist sympathizer. Where are we going? In New York, if New Yorkers are stupid enough to elect a radical Islamist as their mayor, then they deserve what they get next, and it is coming. I truly believe we're at the crossroads of this country. The time for political correctness is over. That's why I've introduced two bills in the Senate to end Sharia law in this country. End it. The first one is No Sharia Act, which makes it illegal to practice Sharia law when it conflicts with our Constitution. As I've repeatedly said, the radical Islam cult is the opposite of everything, I mean everything that we stand for in America. The second bill I introduced, the Preserving a Sharia Law or Sharia Free America Act, prevents all foreign nationals who advocate for Sharia law from entering this country. No more. If you want to practice that, stay where you're at or go to one of the other 50 countries that practices this. The Trump administration banned people from nearly 50 Muslim countries during the first administration. And thanks to Joe Biden's 4 years of open borders, we now have thousands, I mean thousands of terrorists and their sympathizers who entered our country unchecked. How stupid was that? We have to shut off the spigot before it's too late. This is a major national security threat. Radical Islamists have proven over and over again that they are willing to do whatever it takes to kill just one American citizen. And it didn't just happen overseas, it has been allowed to fester and is alive and well in our very own country, just waiting for the right opportunity to attack. So, now's the time to act, because if we don't, we're going to lose this country we know. Open your eyes, America. The values of this country was built on cannot coexist with radical Islam. It doesn't work. It's one, our Constitution, or the other. You can't mix them. This isn't a Republican or Democrat issue. This is an American issue. Just look at Europe. We are headed down the same dark path as what Europe's going through now if we don't wake up. We need to permanently shut down Sharia law in this country before it's too late. Wake up, America. Mr. President, I yield the floor.